and I'm practicing since the last 9 years. I'm practicing at Jain Nursing Home, Andheri East, and at Millet Nursing Home, and All Care Polyclinic, and I go to Criticare also. And thank you, Baby Chakra, for inviting me on this platform to speak on a very interesting topic. आज का टॉपिक है अनीमिया इन प्रेगनेंसी. ये बड़ा ही ज़रूरी टॉपिक है अपने देश के लिए. इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन and anemia is a very big problem in India. So, अपने देश में almost 58% population को anemia है. Almost 58% of the women are anemic in our country, and actually it contributes to 1,15,000 maternal deaths globally per year, which is a huge number. Yes. So let's begin with this topic, anemia in pregnancy. Anemia होता क्या है? जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, जब हीमोग्लोबिन लेवल्स हमारे लेस देन 11 ग्राम्स पर डेसीलीटर हो जाते हैं, उसे बोलते हैं अनीमिया. नाउ अनीमिया की कई कारण होते हैं. व्हाट आर द मोस्ट लाइकली कॉजेज ऑफ अनीमिया? सो द मोस्ट कॉमन बीइंग न्यूट्रिशनल अनीमिया. अभी इंडिया में न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. माल नरिशमेंट होता है कई लोगों में. 70% of the population lives in villages. Okay, उनको अच्छी तरह से खाना पीना नहीं मिलता. So malnourishment is a very big problem. So that is leading to nutritional deficiency in the women of our country, leading to iron deficiency anemia. और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि पीरियड्स के दौरान में बहुत हेवी ब्लीडिंग होना. ये जो हेवी ब्लीडिंग होता है, इससे शरीर में खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है. इनफैक्ट कई लेडीज जब यंग गर्ल्स होती है, जब उनको पीरियड आना चालू होता है, तो उनको बहुत हेवी ब्लीडिंग होता है. अभी उनको ये बोला जाता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लीडिंग तो होता ही है, लेकिन नहीं, इतना ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाट लीड्स टू अनीमिया. एंड ये जो लेडीज होती है, जब आगे जाके वो प्रेग्नेंट होती है, तो उनका हीमोग्लोबिन और कम हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू अ सिवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ओके, और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि बिकॉज ऑफ अनहाइजीनिक कंडीशंस और पुअर सैनिटेशन, साफ पानी नहीं मिलता पीने के लिए, तो उसकी वजह से दे कैन बी पैरासाइटिक इन्फेक्शन, मतलब कि पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन होता है. जैसे स्टूल में वर्म्स हो जाते हैं, जो बोलते हैं ना कि कीड़े पड़ गए हैं. सो दिस ऑल्सो रिजल्ट्स इन अ सिवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. इससे क्या होता है, हमारे शरीर में आयरन एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है. सो ये सब कारण कॉमन रीजंस है अनीमिया होने के. अभी ये अनीमिया से होता क्या है? अनीमिया जब होता है ना, तो उससे प्रेगनेंसी के दौरान में कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. जैसे कि जब अनीमिया होता है प्रेगनेंसी के दौरान में, तब हार्ट पे बहुत जोर पड़ता है. कई बार जब 8वां महीना लगता है, तो 8वें महीने में जैसे अराउंड 30-32 वीक्स प्रेगनेंसी होता है, तो हार्ट पे लोड आता है, तो हार्ट इतनी एफिशिएंटली पंप नहीं कर पाता है, और इस वजह से हार्ट फेलियर के रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं. इनफैक्ट ड्यूरिंग डिलीवरी या डिलीवरी के बाद का जो पीरियड होता है, सिजेरियन के बाद का पीरियड होता है, तभी भी हार्ट फेलियर के रिस्क बहुत हाई होते हैं. इसीलिए अनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफ़ी रिस्की हो जाता है. कई बार ये जो इतना कम हीमोग्लोबिन जब रहता है, तब बच्चे का ग्रोथ भी इफेक्ट होता है. इनफैक्ट दिस लीड्स टू वेरी लो बर्थ वेट बेबीज, विच इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम इन इंडिया. डिलीवरी के दौरान में बच्चे का वजन कम से कम 2.5 किलो से ऊपर जाना चाहिए, बट अपने इंडिया में जो अपने इंडियन स्टैंडर्ड्स अगर हम देखेंगे, तो 2.5 kg ऑन एन एवरेज चाइल्ड बर्थ होता है. अभी इसी कंपैरिजन में अगर अपन यूएस और यूके के बच्चों को देखें, तो उनका जो नॉर्मल बर्थ रेट जो रहता है, जो डिलीवरी के दौरान में बच्चे का वजन होता है, दैट्स always usually around 3.5-4 kg, because malnourishment is never a problem. लेकिन इंडिया में इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. ऑल्सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ता है शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण. तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है बच्चे के ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर ये सब रहता है, तो बच्चे का कांच की पेटी में जाने का मतलब NICU में एडमिशन होने का बहुत चांसेस बढ़ जाता है. सो ऐसे सिचुएशन में हीमोग्लोबिन नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है.
अभी लेट्स डिस्कस द डायग्नोसिस कि हम अनीमिया को डायग्नोस कैसे करेंगे। सो सिम्टम्स क्या होते हैं अनीमिया के। अभी कई बार हमारे क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं जो आके बोलते हैं मैडम हमको बहुत कमज़ोरी लगता है, हमें चलने फिरने में श्वास चढ़ता है, भूख नहीं लगती है, हम हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं। सो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? इट्स डेफिनेटली अ लो हीमोग्लोबिन लेवल, क्योंकि जो वीकनेस आता है शरीर में, हीमोग्लोबिन ही नहीं है, खून नहीं है, तो ताकत कैसे आएगी? So ये these are all very common problems which common symptoms which anemic patients during pregnancy come up with. Also एक चीज होती है जिसको बोलते हैं पाइका। So what is पाइका? ये जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक अजीब सी क्रेविंग होती है कुछ चीज़ें खाने की, जैसे कि जो खाने लायक नहीं होती, फॉर एग्जांपल सीमेंट है, मड है, तो ये सब चीज़ें खाने की इच्छा बढ़ जाती है, विच इज़ कॉल्ड पाइका। सो इस तरह के सिम्टम्स लेके पेशेंट्स आते हैं हमारे पास के, तो जिनको देख के पता चलता है, एक चेहरे पे सफ़ेदी होती है जिन देख कर ही पता चल जाता है कि उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम होएगा। अनदर थिंग इज इसको इन्वेस्टिगेट हम कैसे करेंगे। जब इसको एक बहुत बेसिक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं CBC, अ कंप्लीट ब्लड काउंट। दिस कंप्लीट ब्लड काउंट गिव्स अस एन ओवरव्यू ऑफ द हीमोग्लोबिन, देन द WBC काउंट जो सफ़ेद खून बोलते हैं, and the platelet count. So all these things, this is a simple blood report during pregnancy which is mandatory, which gives us an idea about the hemoglobin levels during pregnancy. तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। प्लस एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं पेरिफेरल स्मीयर। अब ये जो पेरिफेरल स्मीयर होता है, इसमें कई अलग अलग टाइप के अनीमियाज पिकअप हो सकते हैं, जैसे कि एक आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आयरन की कमी के कारण होता है। और भी कई बहुत सारे अनीमियाज होते हैं, लाइक हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक अनीमिया होता है, फिर थैलेसीमियाज होते हैं, एंड हिमोलिटिक अनीमियाज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें पेरिफेरल स्मीयर पे पिकअप हो सकती है। प्लस और दूसरे रिपोर्ट्स, जब आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया डायग्नोज हो जाता है, तभी कई बार जो आगे रिपोर्ट्स रहती है, जैसे कि एक सीरम फेरिटिन लेवल होता है, सीरम ट्रांसफेरिन लेवल्स होते हैं। ये सब रिपोर्ट्स आगे जाके किए जाते हैं जब एक बेसिक हमारा हीमोग्लोबिन लेवल कम आता है। ठीक है। और इसके अलावा वी कैन डू अ सिंपल स्टूल रूटीन माइक्रोस्कोपी। नाउ व्हाट इज द स्टूल रूटीन माइक्रोस्कोपी? जैसे मैंने बताया, पुअर हाइजीनिक कंडीशंस के कारण वर्म इन्फेस्टेशन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में। So when we do a stool routine microscopy, we can pick up eggs of parasites on the stool. ये जब डायग्नोज होता है तो पता चलता है कि जो पेट में कीड़े हो रहे हैं, उसकी वजह से शरीर के अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया और अलग अलग टाइप के अनीमियाज डेवलप हो सकते हैं। ऑल्सो दूसरे डेफिशिएंसीज जो शरीर में रहते हैं, जैसे कि कई विटामिन B12 अगर आपने सुना होगा, तो विटामिन B12 की कमी होने के कारण भी anemias हो सकते हैं। So these are all different types of anemias which we normally see in India. The most common being iron deficiency anemia. अभी ये जो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, इसको ट्रीट कैसे किया जाता है? इट्स अ वेरी सिंपल ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपना बेसिक रूल है दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कई बार जब मेरे पास यंग कपल्स आते हैं जो काउंसलिंग के लिए आते हैं बिफोर दे गेट प्रेग्नेंट, तभी द फर्स्ट बेसिक रिपोर्ट दैट वी डू इज अ CBC, जस्ट टू चेक कि उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है कि नहीं। आई यूजुअली एडवाइज देम कि तुम्हारा एक बार हीमोग्लोबिन 11 क्रॉस कर जाए, देन यू प्लान अ प्रेगनेंसी। बिकॉज जब तुम ऑलरेडी हीमोग्लोबिन लो है तुम्हारा, एंड देन इफ यू प्लान अ प्रेगनेंसी, you are very likely to develop a low hemoglobin level during pregnancy. Why? Because pregnancy के दौरान में the baby is like a parasite. The baby is going to extract iron from the mother, okay, and the baby will make sure that the baby's iron levels are normal. But what will happen is, because of this, the mother's hemoglobin levels go down, and that is exactly what we don't want, right? इसीलिए आप प्रेग्नेंट होने के पहले ही अगर हीमोग्लोबिन लेवल्स अपने नॉर्मल हो, then it is really not an issue. Then what else can you do to bring up your hemoglobin levels? There are certain things that you need to incorporate in your diet, like iron enhancers. अभी iron enhancers क्या होते हैं? Food which is rich in iron. अभी we being Indians, हमारे जो इंडियन बैलेंस डाइट होता है, इट कंप्राइजेस ऑफ एवरीथिंग। मतलब हरी सब्जियां होती है, दाल होती है, सीरियल्स होते हैं, आटा जो अपना गेहूं का आटा या अलग अलग टाइप के आटे। तो ये सारी चीज़ें अगर अपन एक बैलेंस डाइट की तरह लिया जाए तो हमारे शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी। प्लस ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, फेन्यूग्रीक,
then mint, coriander. These are all things which are, which build up your iron in a very good way. Arbi ka saag hai. Then even fruits like watermelon hai, apple hai, fig hai. So these are things. Dates are very rich in iron. Jaggery. So these are all called iron enhancers. So these are things which should be in your diet to bring up your hemoglobin levels. Plus, there is something called as iron inhibitors. Now, ये iron inhibitors क्या होते हैं? They interfere with the absorption of iron in our body. तो ये जो iron inhibitors होते हैं, इसका content हमारे खाने में कम होना चाहिए. Like for example, tea, coffee, caffeine, cocoa powder. Now Indians are high on tea, they're high on coffee. हर 2 घंटे में चाय चाहिए. But ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़ा रिस्ट्रेन कीजिए, बिकॉज अगर ये कंटेंट अपने खाने में ज़्यादा जाएगा तो इससे हमारा आयन शरीर में एब्जॉर्ब कम होगा. So at least during pregnancy, we should make sure that we have limited amount of tea and coffee. It's not हमको बंद करने की ज़रूरत नहीं है. Anything taken in a small quantity is not going to harm your pregnancy. But we should make sure that the quantity that is taken has to be in limited quantity. Okay, it doesn't have to be too frequent, because during pregnancy भी iron supplements mandatory होते हैं. Plus iron supplements भी जाते हैं, calcium supplements भी जाते हैं. So one more important point that I always stress on in my patients is that calcium should not be taken along with iron. So I always make sure that iron and calcium are taken at separate times. So अगर calcium आप morning में ले रहे हैं तो iron आप evening में लीजिए. Why? Because calcium itself interferes with the absorption of iron from our body, right? So these are all things which we need to take care of. अभी कई तरह के आयन प्रेपरेशंस होते हैं जो हमारे आयन को बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर लॉट ऑफ ओरल आयन प्रेपरेशंस, कैप्सूल्स, तरह तरह के कैप्सूल्स मार्केट में है. नाउ दिस कई बीएमसी हॉस्पिटल्स में फ्री दी जाती है, एंड we prefer to start iron preparations from the 4th month of pregnancy. Why? Because in the first three months of pregnancy, there is a lot of nausea and vomiting. So patients are not able to tolerate oral iron preparations. They have a lot of acidity because of iron preparations. So what we can do is we have to start iron from the 4th month of pregnancy, and we continue it not just till delivery, we continue till 6 weeks post delivery or cesarean. Okay. And yeah, so then now there are some patients जो oral iron अच्छी तरह से ले नहीं पाते, तो उनको कई बहुत ज़्यादा एसिडिटी होने लगती है. सो ऐसे पेशेंट्स को वी ट्राई टू टाइम इट कि आप खाना खाने के बाद आयरन प्रेपरेशंस लीजिए. स्टिल इफ दे आर नॉट एबल टू टॉलरेट आयरन, या उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या लूज मोशंस हो रहा है, या हार्ट बर्न हो रहा है, सो इन सच सिचुएशंस हम कोशिश करते हैं कि हम आयरन आईवी इंजेक्शंस दें, आयरन फॉर्म्स, इंजेक्टेबल फॉर्म्स ऑफ आयरन दें. So that is another alternative to oral iron when patients are not able to tolerate iron efficiently. Okay, now ये तो हो गया when the hemoglobin levels are between 9 to 11 grams. That is a good time when we can take oral iron efficiently. But suppose if still, if the patient has a due date close by, that is उनका delivery date अगर पास में है and ज़्यादा टाइम नहीं है उनका आयन बिल्डअप करने से, बिकॉज ओरल आयन जो लेते हैं उसमें जो हीमोग्लोबिन बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है. तो ऐसे सिचुएशन में जब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, डिलीवरी का डेट पास में आ गया है, तो हम आईवी इंजेक्शंस देते हैं आयन के, ज़्यादा फास्ट आयन बिल्डअप करने के लिए. ऐसे भी कई के सिचुएशंस होते हैं जहाँ पेशेंट्स के आयन हीमोग्लोबिन लेवल्स बढ़ते ही नहीं है. लॉट ऑफ टाइम्स दे आर बिलो 6 and 7. तो इन सच सिचुएशंस वी हैव टू गिव देम ब्लड ट्रांसफ्यूजन. तो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूजुअली तब दिया जाता है जब डिलीवरी का डेट पास में हो, एंड वी डोंट हैव टू मच टाइम टू गिव देम ओरल आयन और टू गिव देम आयन इंजेक्शंस टू बिल्ड अप द हीमोग्लोबिन लेवल. ओके, देन व्हाट मोर, आई थिंक मोर सो आई थिंक सारे टॉपिक्स कवर किए हैं आयरन डेफिशिएंसी में. एंड अनदर स्मॉल थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड इज दैट anemia is a very much preventable disease. Correct diet अगर लिया जाए anemia के लिए तो anemia can very well be taken care of. अगर सिवियर एनीमिया होता है तो बेटर होता है कि ऐसे सिचुएशंस में बड़े हॉस्पिटल में डिलीवरी कराए, जहां बच्चे का जहां NICU एडमिशन का फैसिलिटी हो और जहां ब्लड बैंक का अरेंजमेंट हो सके.
ब्लड का अरेंजमेंट हो सके और जहाँ आईसीयू बैकअप हो. दिस इज इन केसेस ऑफ वेरी सिवियर एनीमिया. अगर माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया है तो आप स्मॉल सेटअप्स में भी डिलीवरी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. Another thing is that जो आज का यूथ है, हाँ, they need to be educated about good hygienic practices, about good sanitation, and about taking a healthy diet. Junk food is not good. As we all know, बड़े भी कहते हैं that junk food is not to be taken in so it interferes with your iron absorption. Okay, and also pregnancy के दौरान में अगर anemia है, then iron and calcium supplements are mandatory. They should be taken throughout pregnancy and till 6 weeks post delivery. Right. So with this, I would like to end on a short note that happy healthy parents lead to happy healthy children, lead to happy healthy nation. Thank you so much. अगर कोई questions है तो please बताइए. डिलीवरी के बाद आयरन की टैबलेट कब तक लेनी चाहिए? डिलीवरी के बाद एटलीस्ट 6 वीक्स तक हमें आयरन लेना चाहिए. और हाँ, अगर हमारा हीमोग्लोबिन सिग्निफिकेंटली लो था प्रेगनेंसी के दौरान में तो थोड़ा और लंबे टाइम लेना पड़ सकता है. बट नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल्स के साथ भी टिल 6 वीक्स पोस्ट डिलीवरी इट्स मैंडेटरी. यस. Can low iron cause miscarriages? Yes. अगर बहुत significantly low iron hemoglobin levels रहते हैं, so it affects the growth of pregnancy. And yes, if it is very early pregnancy and if you have significantly low hemoglobin levels, it can increase the chances of miscarriage. Okay, so that is why, as I said earlier, that before you conceive, you need to have normal hemoglobin levels, because during pregnancy, the hemoglobin levels are still going to fall further, right? प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स होते हैं? प्रेगनेंसी के दौरान में अगर हीमोग्लोबिन लो है तो थकान लगना बहुत, there will be lot of fatigue, lot of weakness, lethargy, you will not feel hungry, then there can be shortness of breath. Some people, even some ladies even have this shortness of breath while walking or while climbing stairs. So these are the common symptoms that are seen during pregnancy with anemia. Okay, so you PMS avoiding tips and diet, please. All right. So as I mentioned in my talk, things which you need to inculcate in your diet are lots and lots of green leafy vegetables, lots of jaggery, dates are definitely safe during pregnancy if eaten in a small quantity. We can avoid it in the first 3 months, but otherwise they can be taken. And avoid caffeine products, tea, coffee in a small quantity. It is not to be completely avoided. Okay, hemoglobin कम ही रहता है, what should I do? Okay, so Jasmine, अगर आपका hemoglobin कम ही रहता है तो पहले तो आपके रिपोर्ट्स पूरे होने चाहिए. अगर आपका persistently hemoglobin कम रह रहा है तो आप प्लीज थैलेसीमिया टेस्ट करवाइए. उसको बोला जाता है hemoglobin electrophoresis, जो आप आपके डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं. सीधा लेबोरेटरी में भी जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं. तो अगर थैलेसीमिया आपका डायग्नोज होता है तो उसका ट्रीटमेंट बदल जाता है. ठीक है. और अगर आपका सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसका तो ट्रीटमेंट मैंने बताया है, ओरल थेरेपी से भी बढ़ाया जा सकता है. और अगर बहुत कम रहता है तो आईवी आयरन लग सकता है, जो इंजेक्शन फॉर्म में आयरन दिया जाता है वो भी लग सकता है. Please share some tips on how to increase hemoglobin levels. I just mentioned that. So we need to involve a lot of iron enhancers in our diet. That would be lots and lots of green leafy vegetables. As I said, methi, palak, mint, coriander, arvi ka saag, fruits khaiye khub sare, watermelon, apples, okay, fig. These are things which are very rich in iron. Okay. PMS is more disturbing my routine, like irritation and hunger. Okay, so if this PMS is a different topic altogether, but yeah,
जब when you are having heavy menses or when you are likely to get your menses, okay, and you know that you're going to have heavy menses, this is like having mood swings. Okay, so your premenstrual symptoms are related, more so related to your mood swings and hormonal changes. They may not be so related to your hemoglobin levels. Okay, so then there you need to see a gynecologist. You might need some hormonal therapies and some medicines for your PMS. Okay, what is the best time to take iron tablets during pregnancy? Okay, so iron tablets, we generally start iron tablets from the 4th month of pregnancy. Okay, it has to be continued from the 4th month of pregnancy till your delivery until 6 weeks post delivery or post cesarean. Okay, they are usually not given in the first 3 months because a lot of patients have nausea and vomiting. So iron is likely to cause acidity, so we try to avoid iron in the first 3 months. So because anyways, it's going to aggravate the nausea and the hyperemesis during pregnancy. So from the 4th month. Okay. I am 32 weeks pregnant. My hemoglobin is 10. Please suggest how to increase it. Also, is it possible to have normal delivery with low hemoglobin? Okay, so Manisha, 10 is not bad as per Indian standards. Okay, you only need to take oral iron medicines to bring up your hemoglobin level. Yes, make sure that your hemoglobin level crosses 11 at least by the time you reach your delivery date. Okay, but otherwise 10 say 11 karna is not very difficult. You can continue taking your oral iron preparations. There are a lot of good iron preparations available in the market which do not cause any acidity. So I think oral medicine should be good enough. Okay, and you can very much have a normal delivery even with low hemoglobin levels. There is no contraindication as to having a normal delivery. There is there's no rule like you should have a cesarean if there is no low hemoglobin levels. Okay, so you can very much have a normal delivery. Plus, if the hemoglobin levels are below 10, we just, every obstetrician, they always keep blood ready when you are close to your delivery date. Okay. Bhavna Handa, miscarriage हो गया, 2 months pregnant. ओके, सो भावना, अगर आपका मिसकैरेज हुआ है और 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी पे, तो अब उसमें भी ब्लड लॉस होता है, तो इसीलिए आपको उसके मिसकैरेज के बाद 1 मंथ के लिए आयरन और कैल्शियम लेना ज़रूरी है, क्योंकि शरीर में वीकनेस आती है। प्लस उसके बाद आप जब भी आगे प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करेंगे, आप प्लीज़ आपके आयरन सप्लीमेंट्स कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपका आयरन लेवल कम नहीं होना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान में, ना प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करने के पहले। सो स्टेडी आयरन लेवल्स नॉट जस्ट फॉर प्रेगनेंसी, नॉर्मली भी स्टेडी आयरन लेवल्स होने ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज आपको कंसीव करने में भी डिफिकल्टी आ सकती है ओवरऑल वीकनेस के कारण। सो आई थिंक यू कैन कंटिन्यू आयरन। Is jaggery and kaju good at this stage? People advise they are heated products and they should be eaten. No, you can have jaggery. See, Kinjal, anything had in a very small quantity is not going to harm your pregnancy. I definitely recommend my patients to have jaggery. In fact, people love to have jaggery also, and it's full of iron, so there's no harm. You can continue taking jaggery, and कोई गरम नहीं होता है। फर्स्ट 3 मंथ्स जो रहता है ना प्रेगनेंसी के, तभी आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज एज आई सेड छोटे क्वांटिटी में लिया जाएगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। My platelets around 30,000 never increase. Okay, so Jasmine, if your platelet counts are only 30,000 and they are not increasing beyond that, and you also have heavy bleeding, but then you need to investigate, you please see a hematologist. A hematologist would be the right person. If your platelets are just 30,000, we need to find out what is the reason for low platelets. Okay, so it is not just iron deficiency anemia. Okay, low platelets have to be investigated further. So there are a lot of conditions wherein the platelets remain low, but for that you will have to see a hematologist and undergo complete series of investigations. I hope I've been able to solve everybody's doubts. I'm glad I've been able to answer a lot of questions.
If you have any more queries, you can have my email address. My email address is drshailydungarwal@gmail.com. You can send me your queries. I'll reply back. I'm also there on Facebook. You can send me a personal message on FB, and I will reply whenever I have the time. Thank you so much for your time, and thank you for having me here, Baby Chakra.